Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम राजीव। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks declined more than 0.5%. Sensex finishes below 59,700. Nifty settles below 17,800. Rupee appreciates to close at 74 rupees and 24 paise per dollar. And global equity indices witnessed losses amid concern over rate hikes by the US Fed. घरेलू शेयर बाजार में आज फिर बिकवाली, आधी फीसदी से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 59,700 से नीचे आया, निफ्टी 17,800 के नीचे फिसला। $1 की तुलना में रुपया हुआ मजबूत, 74 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंचा। और अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका पर वैश्विक बाजारों में भी हुई गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोरी का संकेत मिला, जिससे निवेशकों की धारणा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक यानी 0.62% घटकर 59,636 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 134 अंक यानी 0.775% कम होकर 17,765 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। इनके शेयरों की बिकवाली कहीं अधिक तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.68% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.52% की गिरावट हुई। The Sensex and the Nifty today fell more than 0.5%. Both stocks declined amid mostly negative global equity indices. The Sensex closed below 59,700 and the Nifty ended below 17,800 level. The BSE Sensex declined 372 points or 0.62% to finish at 59,636. The NSE Nifty also tumbled 134 points or 0.75% to end at 17,765. In the broader market at BSE, the mid-cap index plunged 1.68% and the small-cap index declined 1.52%. In the Sensex pack, shares of 6 companies gained while 24 logged losses. SBI was the top gainer as it surged 1.2%, followed by Power Grid, which gained 0.6%. HDFC Bank closed 0.5% up. On the other side, Mahindra & Mahindra plunged 3.3% and Tech Mahindra tumbled 3.2%. HCL declined 2.9%, while Larsen & Toubro and Tata Steel both slipped 2.7%. In sectoral indices, all 19 sectors logged losses. Metal sectors plunged 2.8% and auto sector stocks declined 2.3%. Capital goods fell 1.9%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,001 companies gained while 2,339 fell. Shares of 122 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर।
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.15% घटकर 95.69 पर आ गया। राजीव, शेयर बाजार में पिछले कुछ सत्रों से गिरावट का दौर हम देख रहे हैं। तरलता बाजार से घटने की आशंका व्यक्त की जा रही विशेषज्ञों की ओर से भी और निवेशकों के मन में भी ये धारणा बढ़ रही, तो हम क्या मान के चलें कि जो मजबूती का एक लगातार हमने लंबा दौर देखा वो अब मंदी की ओर बढ़ेगा, मंदड़िए हावी होंगे बाजार पर? मनोज, देखिए, अगर आप इस पिछले 1.25 साल की तेजी को देखेंगे तो उसमें और पिछले जो आपने 15-16 साल में जो बाजार में तेजी और उतार चढ़ाव देखा, तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि पिछले सालों में क्या होता था कि जब भी बाजार कुछ चढ़ता था थोड़ा सा करेक्शन आता था। ये बुल फेज शुरू हुआ था दिसंबर 2013 या आप कहिए कि 2014 के आसपास ये फेज शुरू हुआ था। उसमें भी 5 से 6% कंटिन्यूस करेक्शन आते रहते थे, जिसमें डिफरेंशिएशन होती रहती थी, सेक्टर रोटेशन होती रहती। इस बार जो पिछले 1.25 साल में तेजी आई है उसमें एक धाट भी आपने मतलब हार्डली है कि एक्सेप्ट कि जब कोविड के समय पे जो लॉकडाउन लगा और वो जब करेक्शन हुआ, उसके अलावा तब उसके बाद से कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है, डिसेंट करेक्शन। सो और वैल्यूएशन वाइज हम आज अगर आप बात करेंगे तो नॉट एक्सपेंसिव, आई थिंक लिटरली वेरी एक्सपेंसिव रेंज में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसके दो ही चीजें हैं कि या तो अर्निंग उतनी स्पीड से बढ़ जाए या जो है कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करे ताकि जो मीन रिवर्जन की जो बात होती है वो वापस यहाँ पे भी लागू हो। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े दिन जो है टाइम वाइज करेक्शन होगा। इंडेक्स लेवल पे शायद बहुत बड़ा करेक्शन ना हो, क्योंकि अगर रूपी वीक होता है तो हम देखते हैं कि आईटी स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, अगर रूपी स्ट्रांग होता है तो बैंकिंग हो जाता है, अगर ऑयल घटता है तो बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं बिकॉज यील्ड्स थोड़ी सी कम हो जानी शुरू हो जाती है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि ग्लोबली जो पैसा फ्लो कर रहा था, जो कि इतना सेंट्रल बैंक ने इतना पैसा डाला है, उसका एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इमर्जिंग मार्केट में आ रहा था एसेट क्लास में, और उसका जो पार्ट है वो इंडिया की इक्विटी मार्केट में भी आ रहा था। हाँ, वो थोड़ा सा कम होगा। तो वो कम होने का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड होता है कि भाई अभी तो क्या है कि कंपनी ने थोड़ा सा भी कुछ अनाउंस करा, पैसा इतना ज्यादा, वो पैसा लेफ्ट आउट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग इतनी ज्यादा थी कि लोग उसको बढ़ के ले लेते थे। आप ले इन केस ऑफ पेटीएम, जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने बढ़ के अप्लाई करा और आज पहले दिन 25% वो नीचे खुला है अपने इशू प्राइस से। तो मेरे आपकी बात जो आपने कही मंदी होगी, बट जैसे कि तेजी बहुत डिफरेंट रही है वैसे मंदी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो करेक्शन का दौर या आप मंदी का दौर जिसे कहें, वो एक डिफरेंट फॉर्म लेके आएगा। उसमें एक सेक्टर चलता रहेगा, दूसरे में करेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप अभी देखें तो एफएमसीजी पिछले 1 साल से कुछ नहीं करा स्टॉक्स में, तो वो मंदी है उनमें। जी। So what you are saying is that this rapid fall is a beginning of the much awaited correction, and is it likely to persist for a while, Rajiv? What I'm saying, Rajesh, is that this time the way the market has moved up has been very different as compared to last almost 2 decades. This time also it's going to be, the correction is also going to be coming in a different form. Index would not see a very sharp correction because the way it is made up, structured, given the weightages of IT and banking and countervailing forces. We had a large part of the last part of the rally has been led by metal stocks. So what my reading is that we will see a correction where index will continue to outperform. But in a broader market in mid and small cap, there are going to be far more sharper correction, and it is a time for people to have a relook at their portfolio and purge it non-performing companies where the fundamentals are not only doubtful, where the quality of the man doubts, they should just move out of them.
Okay. So the market is quite weakened now, and the factors contributing, as you said a while back, are lofty valuations. How much is the FIIs contributing towards that? There's been a sustained selling by them. Well, I mean, they have been. See, if you look at even last year, they were largely sellers, and given the fact that the way the SIP structure, the SIP has taken on in this country, even if they're seller, it doesn't mean much now. I mean, like, what they will see, they're going to bound to be sellers, especially at this time of the year, because their financial year is ending in as up takes place in December. So they get their redemption request in their funds, and they tend to be seller across the board. So I don't think so that we are going to see them turning buyers in a hurry. And that would be another reason why we see probably pressure in some pockets in the market, especially in the sectors where they have high exposure, which includes IT and pharma, and to some extent metal. So in my opinion, they probably will remain seller, but it will not impact that much as it used to be in past. राजीव, आपने एक बहुत मार्के की बात कही है कि जो FIIs थे उनका प्रभाव पहले की तरह अब नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या हम यह मान के चलें, जो घरेलू निवेशक हैं, खासतौर से जो खुदरा निवेशक हैं, उनके निवेश का जो दायरा बढ़ा है, और स्थान ही नहीं यानी बल्कि छोटे छोटे शहरों से जो रुझान या कह लें जो एक प्रवृत्ति बनी है पिछले 1-1.5 साल में, कि छोटे शहर के निवेशक भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से या डायरेक्ट इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं और नियमित रूप से डाल रहे हैं, तो क्या भारतीय बाजार अपने बूते पर अच्छा प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है आपको इस करेक्शन के दौर में भी? नहीं, मुझे ऐसा लगती, देखिए मनोज, ऐसा नहीं होगा कि उनकी रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि FIs जो है वो ऐसा लगता था भाई उनके अलावा तो वो सर्व है बाजार के, अगर उन्होंने 500 करोड़ का माल बेच दिया तो अगले दिन बाजार नीचे खुलता था 50 पॉइंट, और ये लगता था। पर अब ऐसा नहीं है, अगर बेच दिया तो कोई बात नहीं, DI के पास इतना SIP का फ्लो आता है कि उनके पास कोई वो बायर बन जाते हैं और उनकी सेलिंग को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास उनका मैथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि उनके पास जो शेयर है वो लार्जली बहुत लार्ज कंपनीज के हैं। तो मान लीजिए अगर HDFC में 70% से ज्यादा स्टेकर FI फॉरेन कंपनीज का है, तो उसमें से 2 या 4% बिकने आ जाता है। HDFC बैंक में स्टेक बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसा नहीं है कि बाजार पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट वो उतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना पिछले सालों में होता था। मेरे हिसाब से देखिए, अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये सोचना है कि जो मैं स्टॉक ओन करता हूँ वो किस बिजनेस में है और मैं उसे कितने समय के लिए रख सकता हूँ। अब अगर किसी के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, TCS या L&T और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर इकोनॉमिक साइकिल में, चाहे मंदी रही हो चाहे तेजी रही हो, उसके बाद वो मंदी में शायद थोड़ा कम बढ़ते हैं लेकिन जैसी तेजी आती है ज्यादा बढ़ते हैं, तो उस निवेशक को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वो हो जाए मंदी 5%, 10% की 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिकवर करके इस भाग से भी ऊपर चल जाएंगे। बट अगर किसी के पास शेयर है जिसमें से कुछ कंपनी IBC में है, कुछ उन्होंने ले ली थी क्योंकि उनके पड़ोस की मित्र ने बताया था कि इस कंपनी का भाव ये हो जाएगा, और उन्हें ये नहीं पता कि कंपनी करती क्या है किस बिजनेस में, तो वो सारे निवेशक हैं, उन सब लोगों को भी वो समय है तो उन्हें बात और ऊपर वाले ने मौका दिया कि आप प्लीज इनसे बाहर निकल जाइए और अच्छी कंपनी है लार्ज कैप, अगर आप अपना समय नहीं लगा सकते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई स्टॉक मार्केट बिल्कुल खराब होगी और सब कुछ आप बेच दीजिए, या ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए, अगर आपने किसी ने PSU बैंक लिए होते 2020 मार्च 2020 में जब बिका, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम अभी तक अपने फेब 2020 के भाव पे नहीं आए जी। बट एज कंपेयर टू दैट देयर आर अदर स्टॉक जो अपने फेब 2020 के भाव से भी 6% 4 गुना ऊपर है।
सही बात। तो अगर केमिकल कंपनीज है तो एक ब्रॉड ब्रश करना स्टॉक मार्केट में बड़ा मुश्किल काम है, बट इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपके पास होनी चाहिए और उसका प्रिंसिपल ये है, अच्छी इक्विटी एसेट क्लास में अच्छे वाले शेयर होने चाहिए। अच्छा क्या चीज जो बिजनेस ग्रो करे और जिसका मैनेजमेंट क्वालिटी, और उसके बाद आप टाइमिंग को छोड़ दीजिए कि टाइमिंग करना सारा दिन स्क्रीन पे डीलिंग रूम में बैठ के सब कुछ करने के बाद सालों के बाद, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग टू डू। फॉरगेट कि आप इसे पार्ट टाइम जॉब अच्छा भी एक्स्ट्रा सेविंग है लगा देते हैं तब कर लें तो हो जाए। So how do you view the mid-cap index which plunged 1.68% and small cap declined? I'm very skeptical about it, and I'm skeptical about the fact that the index, essentially, what happens is indexes essentially are made to camouflage the ups and the moves. See, they are a collection of stocks which the exchange want to be a representative of. Now, how successful they are, even in mid-cap, let's say if you remove in mid-cap index, if you remove few of the top stocks, their performance would be looking far worse. So in my opinion, deciding your investment strategy based on index movement is slightly flawed, especially when you're looking at buying them. To me, there is a good scope of correction, and I might be wrong, given the fact that if 2 or 3 the top weighted stocks in the Nifty or Sensex mid-cap move up, and then this index can move up, but rest 90% of the share can correct, stocks can correct. And this has happened in the past, and most probably, I haven't looked at the numbers exact, but I think advanced decline ratio of this index in last 4 or 5 days has been pathetic. At an index level, they might have moved up, but at an underground level, if you look at the numbers, they probably have not done what they're supposed. They're not representing the broader mood of the mid cap and the small cap. To me, it's a time to be cautious and rejig your portfolio. Move into sectors which have got a strong tailwind due to COVID, and to companies and sectors where management has shown that they have the ability, to pass on any increase in the cost inflation. See, right now, if you look at it, there has been a sharp increase in the raw material for every manufacturing sector. Okay. And even in IT services, the wages have gone up like anything. Attrition rate has gone up in IT sector like mad. So there are IT companies which are going to find it tough to manage that attrition. There are IT companies which will able to pass that increased cost to their customers because they have the skill set which customers definitely require. So move to a company and the stock of that company where there is a distinct strength which that company has. Okay. And now, see, Rajesh, the practical part is not many people have time to look at this, spend their time. If they don't have spend their time, please go through the mutual fund route, because there is a professional guy who's going to take care of your, money, and at least will ensure that in a sharp correction, the damage to your wealth is least possible. Okay. So, just again drawing your attention to how the sectoral indices performed today. Metal sectors plunged 2.8%. Auto sector declined 2.3%. And they reported weak festive sales numbers. And of course, the supply shortages in semiconductors is still there. So, and apart from these two, I'm also going to add crude oil prices. So all these are going to weigh down the Indian market. Crude is the one. I think crude is a bigger factor which is going to weigh down on the Indian market. See, it for two reasons. One, crude has a very high direct correlation to the disposable income of Indians. Now, if that moves up, then the disposable income in terms of the productive disposable income. If one is traveling 10 kilometers in a day for his office and was spending $70 for it, now he's spending 110. The job which he's achieving of reaching office is pretty much the same, but the money is essentially being paid as an import bill. So that money, that the consumption is, the money is being spent in India, but the profit is being made out in the Middle East. So that is one thing which has which to me is an issue.
is a big red flag for Indian stock market at this point of time. Otherwise, if you look at the other broader this thing, if India in last 1.5 years has been able, there is a change in the perception about India, both as a stock market as an economy. You know, if you look at when I read large number of reports from these foreign brokerages, their tone and tenor about telling about India is not that India is one of the emerging markets. Now they've started talking about in some sectors that India is a player where you will find, not today, maybe 10 years down the line, companies which are of world class. And some of them mention about companies like, you know, in manufacturing sector, which I never heard in my career of last 25 years. So to me, that is a big shift. And that's what that shift that brings is, the EPS might not increase in short term, but the price earning multiple which a company will get will move up from, you know, let's say from 15 to 20. And that is good extremely good as far as the return to a retail investor on the stock price is concerned. So that has happened. Now, how much of it we are able to capitalize by our policy making has to be seen. See, we had a head start in terms of reducing our corporate tax rate, and we had a head start in terms of PLE. Now, to me, PLE is a scheme which I think it's something which needs to be watched very carefully, because if we are able to deliver, if we, 2 years down the line, we see that those PLEs have been able to push our exports and things have turned better, I think then on a manufacturing side, where India for ages has been lagging, that would turn the sentiment in a very positive manner. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले ध्यान देते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती बरते जाने की आशंका निवेशकों पर आज हावी रही। इसके अलावा चीन में टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई, जिसका असर अन्य बाजारों पर भी देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों सूचकांक 0.5% घाटे में रहे। जापान के निक्केई 225 में 0.3% की गिरावट हुई। उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% लुढ़क गया। हालांकि निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो मिला जुला रुख था, कारोबार सीमित दायरे में चल रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का FTSE 100 0.2% नीचे था, जबकि फ्रांस के CAC 40 और जर्मनी के DAX दोनों में 0.2% की वृद्धि बनी हुई थी। On the Wall Street, indices fell yesterday as investors fretted over early rate hikes by the Federal Reserve after strong retail earnings. The Dow Jones Industrial Average declined 0.6%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both fell 0.2%. Rajiv, quickly, fresh COVID-related disruptions may further aggravate the supply-side issues, adding fuel to the inflation fire. Yes, and that is probably going to, if it continues for longer, then central banks will have to think on their continued, policy of easy money, and because they will have to, if inflation becomes stubborn, then it's going to create a further problem for, keeping the interest rate low, and that is what is another big red flag for the Indian markets. And emerging markets rather, not only Indian markets. जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। नई दिल्ली में ऋण के सतत प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा में ऐसा समय आता है जब वह नई उमंग के साथ संकल्प सिद्धि को प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस निश्चय को पूरा करने के लिए सारा देश एकजुट हो जाता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय हो चुका है और इसे हासिल करने के लिए हम मजबूत धरातल पर हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास अब पर्याप्त मात्रा में धन है। उन्होंने कहा कि जनधन खाता खोलने से अनेक लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाया जा सका है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। उन्होंने कोविड के दौरान देश में
स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल के गठन पर चर्चा करते हुए कहा कि इस फैसले से आज बैंकों की रिकवरी बेहतर हुई है और उनकी स्थिति मजबूत हुई है। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि मौजूदा सरकार ने फंसे हुए ऋण के मुद्दे पर ध्यान दिया, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया, उनकी ताकत बढ़ाई, आईबीसी जैसे सुधार लाए, कानूनों में सुधार किया और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को मजबूत किया। राजीव, बहुत संक्षेप में हम समझना चाहेंगे NARCL का जो गठन हुआ, यानी कह लें कि बैंकों की स्थिति एनपीए को सुधारने के लिए, वह कितना सक्षम साबित हुआ है और कैसे इसने लाभ पहुंचाया है, संक्षेप में। देखिए, अभी मनोज वो तो खैर कार्यान्वित होगा, लेकिन जो क्लीन अप जो हुआ है 2014 से, तो आप बैंकों की जो बैलेंस शीट है पे आज उस पर विश्वास कर सकते हैं कि पीएसयू बैंक जो अगर कह रहे हैं कि उनके एनपीए इतने हैं तो इतने ही है, ये नहीं है कि आधे तो एनपीए छुपा दिए। इसकी वजह से ये आप देखेंगे एसबीआई जैसा स्टॉक जब वो चला तो सीधा ऑल टाइम हाई पे अपने वो जो है चला गया। तो यू कैन नाउ बिलीव इन दी बैलेंस शीट ऑफ पीएसयू एज कम्पेयर टू 5 years बैक। Prime Minister Narendra Modi has stressed on the vision to create an ecosystem for innovation which will make India a leader in drug discovery and innovative medical devices. He emphasized on ramping up domestic manufacturing of key ingredients for vaccine and medicines, saying that this is one frontier that India has to conquer. The Prime Minister today inaugurated the first Global Innovation Summit of the pharmaceuticals sector through video conferencing, terming the India pharma industry a key driver of country's economic growth. Mr. Modi said high quality and quantity at affordable prices has generated immense interest in the Indian pharma sector around the world. He said the Indian healthcare sector has attracted over $12 billion foreign direct investment since 2014. बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया देश के स्वास्थ्य क्षेत्र पर और दवा कंपनियों के प्रदर्शन पर। एक आईटी के बाद ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमारे पास एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, एंड प्रोबब्ली दैट इज वेयर another round of winners would come in next 10 years. Moving on, the oil prices today slumped, driving major benchmarks to the lowest settlement level since early October. The crude prices fell after OPEC and the International Energy Agency warned of impending oversupply, while rising COVID-19 cases in Europe increased downside risks to demand recovery. In intraday trade, Brent crude was trading around $80 per barrel, while WTI crude prices were at $78 per barrel. So we at times talk of a glut. Now we are talking about oversupply, and then at times we talk about short supply. I mean, how do we see oil as we go forward? संक्षिप्त में, I think probably a cartel is ensuring that it stays high, but the numbers because there is no reason why when the actual consumption is lower than pre-COVID times, the prices should be so high. So I think probably they will try to keep it higher, and there is a requirement for it to come down. For them, even them, they should understand that at this price, the demand is going to get affected. In any case, they have a couple of years to make money. EVs are going to come much sooner than they are expecting. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दिखी है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 120 रुपए घटकर 49,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 305 रुपए घटकर 66,320 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने का मूल्य कम हुआ, $1,867.90 प्रति औंस पर आ गया। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, राजीव। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन। Domestic stocks declined more than 0.5%. Sensex finishes below 59,700. Nifty settles below 17,800. Rupee appreciates to close at 74 rupees and 24 paise per dollar. And global equity indices witnessed losses amid concern over rate hikes by the US Fed. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow,
Goodbye. Market